Good Friday is celebrated because on this day Jesus Christ accepted to be crucified in order to prove that nobody can crucify him and he is able to resurrect. On the same Friday, Paramhansa Yogananda entered into Mahasamadhi on 7th March 1952. Time was 9:30 p.m. Today the 7th March. No, today is not Friday, but on that day it was Friday. Why it is called Good Friday? Means if anybody has reached to the highest stage of self-realization, Kaivalya, that person demonstrates the willing departure and give message to all dedicated people how to live in this world, and after that departs, and after that prove also that there is no death, is able to resurrect. Lahiri Mahasaya resurrected 5 times. Jesus Christ resurrected once. Iktishugi resurrected few times. Therefore, science of resurrection is the real education for human being. Sometimes we resurrect in invisible form, but if you are able to resurrect an invisible form, that is the great. That gives more understanding about this science. Kriyayoga Meditation एक साइंस है जिसमें हम सेलिब्रेट करते हैं गुड फ्राइडे और रिसरेक्शन डे। आपने सुना होगा जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था। जिस दिन सूली पर चढ़ाया गया था वो शुक्रवार था, इसीलिए उस दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने जो कहा वो करके दिखाया। वो कहे थे कि इस शरीर मंदिर को गिरा दो और हम 3 दिन में बना देंगे। तो उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा कुछ प्लान किया, उनके शरीर को लोगों ने क्रूसीफाई किया, सूली पर चढ़ाया और तीसरे दिन फिर प्रकट हुए। ये बात इसलिए सही है, लाहिड़ी महाशय भी कम से कम 5 बार तो हमें पता ही है, 5 बार शरीर छोड़ने के बाद प्रकट हुए, रिसरेक्ट हुए। उसके पहले कई बार हुए, एक जगह रह करके अन्य जगहों पर जाना। ऐसे स्वामी तीर्थगिरी भी कई बार। इसे रिसरेक्शन और डिपार्चर बहुत बड़ी चीज़ है। ये अगर स्वेच्छा से कोई सही छोड़ता है तो उसको कहते हैं तेरही मनाना। तेरही को लास्ट सफर कहते हैं। अपने देश में तेरही मनाते हैं, इसे लास्ट सफर कहते हैं। तेरही का मतलब क्या होता है? टोटल 14 सीढ़ियां होती हैं अध्यात्म की। जब आदमी 13वीं पर होता है तो उस समय उसके अंदर अनंत धैर्य, अनंत प्रेम, अनंत विनम्रता आ जाती है। ऐसा आने के बाद ही वो 14वीं पर प्रवेश करता है, जिसको सत्य लोग कहते हैं। जहाँ जाने के बाद पता चलता है कि हमारे परब्रह्म के बीच में दूरी नहीं है, यानी हम दोनों एक है, अलग है ही नहीं। न अलग थे, न अलग है, न अलग रहेंगे। वो है 14वीं में। तो यह 13, ये 14वीं सीढ़ी वही है। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं 14 भुवन, 7 पाताल, 7 स्वर्ग। तो जब जीसस क्राइस्ट का 13वीं पर्व था तो उसको लास्ट सफर कहते हैं। परमहंस योगानंद जब 13वीं के पर्व में थे तो बहुत बड़ा लास्ट सफर हुआ था। 50 देश के लोग इकट्ठा थे, 50 देशों के दूतावास के लोग, जो दूतावास में
नौकरी करते, कॉन्सुलेट जनरल हैं, एम्बेसडर हैं और कैलिफोर्निया के गवर्नर थे, ये सब वहाँ पर उपस्थित थे, 240 लोग। और उनके सम्मुख उन्होंने एक संदेश दिया और वहीं लास्ट सपर हुआ, एक साथ सब भोज किए। उसका परमहंस योगानंद शरीर छोड़ दिए। वहाँ तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि शरीर पड़ी रही हफ्तों, उसमें न तो शुष्कता आई, न कोई फफूंदी पड़ी, न कोई दुर्गंध आई, जबकि ऐसा कुछ दवाएं वगैरह नहीं लगाई गई थी कि उनके शरीर को इस तरह से कर दिया जाए कि दुर्गंध ना आए। ऐसा नहीं था। क्रीम भी नहीं लगाई गई थी। जनरली जब शरीर मरती है तो क्रीम लगा करके पोर को बंद कर देते हैं। पोर को बंद कर देने के बाद फिर अंदर से ऑर्डर दुर्गंध नहीं आता और मोल्ड भी नहीं पड़ता। उनको ऐसा नहीं किया गया था। अभी हम आपको उसको बाद में समझाते हैं। 13वीं का अर्थ है जब ये भूल गए लोग कि लास्ट सपर क्या है, तो शरीर छोड़ने के बाद 13वें दिन बाद 13वीं मनाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत है। अभी कुछ कहिए आपस में समझ नहीं पाएंगे, सुन करके कह करके समझा नहीं जा सकता, पढ़ करके समझा नहीं जा सकता है। केवल जब प्रभु के प्रेम में आप लिप्त हो जाइए और प्रभु का प्रेम क्या वो समझिए, जब प्रभु के प्रेम के माध्यम से किसी को समझिए तभी आप समझ पाएंगे। प्रभु के प्रेम के माध्यम से कोई किताब पढ़िए तो अर्थ आएगा, नहीं तो अर्थ नहीं आएगा। पढ़ते रहिए, खोज करते रहिए, अंतिम खोज नहीं कर पाएंगे। बीच में अनेक खोज होगी, अनेक चीजें प्रकट होगी। विद्युत आया, वाईफाई आया, एरोप्लेन आया, रॉकेट आया, दुनिया भर की चीजें, लेकिन अंतिम खोज नहीं हुई अभी, क्योंकि प्रभु के प्रेम में हम संतृप्त होकर के खोज नहीं किए। वहीं पर स्वामी गिरी प्रभु के में संतृप्त होकर के अंतिम खोज का लिख भी दिए। क्या लिखे कि परमाणु होता ही नहीं है। परमाणु का अर्थ इसमें जो दिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। देखिए पेड़ों में भी आप चलिए खुश होइए तो पेड़ बढ़ते हैं। तो जिसको भी एटम कह लीजिए, ये जो है इसे भी आप एटम कह सकते हैं, धूल के कण को भी कह सकते हैं। अंतिम सत्य एक होता ही, लेकिन दिखता है कि है, यही तो माया है। हम कैसे अंतिम सत्य को हम पहचाने, उसी के लिए क्रिया योग ध्यान है जो आप अभ्यास कर रहे हैं। I want to just give this message that Good Friday should be for all, but we have not reached to the highest stage of self-realization that we can depart willingly and we can resurrect. If you can depart willingly, you can resurrect also. Therefore, Good Friday means it demonstrated by Jesus Christ. He accepted willing departure in the most different way. And let them crucify. He was teaching science of immortality, that death never exists, but people were not believing. And he demonstrated, see, Lazarus is not dead. Lazarus was worried, and he demonstrated there is no death, and he raised Lazarus. In the same way, Lahiri Mahasaya raised. Therefore, important thing is this: Good Friday should be for all. It is only possible when you practice Kriyayoga Meditation, reach to the height that you should depart willingly. When you are departing willingly, then generally we celebrate the Last Supper. Last Supper means a congregation with the feast. It was done by Jesus Christ, Last Supper. In the time of Paramhansa Yogananda, last departure, there was a big Last Supper. 50 countries, foreign diplomats were present. In front of them, Parmhansa Yogananda gave brief message, and after the Last Supper, everybody was delivering their message. Parmhansa Yogananda's message was eternal. After giving message, Parmhansa Yogananda dropped his body willingly, and body remained undecayed weeks together. Because this Last Supper, what was celebrated in India in the name of Terahvi, how we pronounce it, Terahi.
you can put it doubly. Terahi means 13. Because altogether there are 14 steps. Ascension of 14 steps. 7 patal steps, 7 heaven steps. When we reach to the 13th, that is called Terahi. That is called the Last Supper day. In that there is a feast. After that you give a message. Then when depart, then you enter into 14th sphere, that is Satyaloka. Then you realize you are one with God. After that you can resurrect. If you are not able to resurrect, it means you have not learned how to depart willingly. If you can depart willingly, you can resurrect willingly. This is 100% truth. This Kriyayoga science is dedicated to teach this science how to depart willingly and how to resurrect. Recharging what you practice, it was discovered in 1916 by Parmhansa Yogananda. When people were practicing traditional asanas, head stand, shoulder stand, this stand, that stand, you cannot practice it at the age of 80 and 90. And young age also, when you practice too much asana, you will have mental problem. Breathing exercise, what is taught, if practice that, you will have mental problem. Therefore, in order to know in the future, Swami Shree Yogi advised Parmhansa Yogananda to just give this, the recharging new system. In 1916, recharging was discovered and Parmhansa Yogananda gave practice that you are going to practice as 1 to 42 steps. With the help of guided meditation. This you can practice at any age. You can practice in lying position, sitting position, standing position, but other practices, suppose that it is said head stand, it increases intelligence. That is completely false. Head is up, everything is below. Head needs always oxygenated blood. When you have head stand, you have more accumulation of blood in the brain. That disturbs thinking. But you see, in the book you will find it is written. Therefore, when you practice recharging, it includes all kind of practices. Therefore, I request all of you, in the honor of Parmhansa Yogananda departure day, today 7th March 1952, he departed. 9:30 p.m. he gave message and he dropped his body. Therefore, we are going to practice recharging in order to show the greatest honor to Paramahansa Yogananda and our masters. Swami Bhavanand will display audio and he will practice. I will also practice, but I practice something more, double of that, therefore I will practice separately. आप सब एक गाइडेड मेडिटेशन से प्रैक्टिस करें रिचार्जिंग, हम सेपरेट प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि हम उससे ज़्यादा करते हैं. यहाँ करेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होगा कि गाइडेड कुछ और जा रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं. नाउ स्वामी जी, just one thing I can say, recharging, what is this is called 1 to 42 recharging. One thing I can tell you, what is name given recharging. Recharging, energization. What is energization? What is recharging? Because when we are born as pure consciousness. We don't practice any casteism when we are born. We don't practice color difference. We don't practice nationality. We don't practice faith difference. We accept all creations equally great. But slowly, family members and friends and others, they start teaching illusion. They start teaching illusion, your nationality, your caste, your creed, your family, your home, all these things. This is mine, this is yours, this is mine, this is yours, this is good, this is bad, this is virtue, this is sin, this is loss, this is gain. All these teachings are given to the newborn baby. The newborn baby is losing their knowledge. So this is very important because when we lose our knowledge, then we get fear. When we get fear, then we have to recharge. Recharging is to get rid of fear. In this what we practice
awareness of attitude with the concept of first principle of Vedas, which is given in holy science, that Paramah is all in all. In Paramah there is power, knowledge, peace, bliss, immortality. Therefore, when you practice recharging, then what you feel within each and every moment is presence of power of all kinds, knowledge of all kinds, eternal peace and bliss. This is the important point. Therefore, recharging is very important. What is the way of discharging? Suppose that you see the flower. Children will like all flowers. This is the animal. Children will like all animals. Children will like everything. But you used to teach that use your eyes and select which is beautiful, which is ugly, which is good, which is not good. In the same way, on the platform of senses, we are taught to select what is good, what is bad. This is the problem, because we practice likes, dislikes, therefore we are having this process of discharging our life force. Our life force is just decaying, therefore we need discharging. हम जब पैदा होते हैं तो बच्चे एकदम शुद्ध फॉर्म में होते हैं, उनको ये नहीं होता कि हमारा घर कि आपका घर, चमड़े का रंग के आधार पर देखे कि कौन अच्छा कौन नहीं, कौन लंबाई चौड़ाई क्या है, ये अपना घर है कि नहीं है, हमारी जाति क्या है, धर्म क्या है, देश क्या है, उनको कुछ भी नहीं पता, एकदम शुद्ध रूप में होते हैं. फिर घर वाले, स्कूल वाले, फ्रेंड लोग सिखाते हैं, ये द्वंद्व सिखाते हैं, डुअलिटी. जैसे जैसे डुअलिटी में हम प्रवेश करते हैं वैसे वैसे लाइफ फोर्स हमारी वेस्ट होती है. इससे रिचार्जिंग की जाती है कि लाइफ फोर्स वेस्ट ना हो.